In order to fulfill our intent, we have with us today our two alumni, Ms. Shweta Garg and Mr. Dhruv Sharma. Ms. Shweta Garg is currently pursuing her LLM in Alternative Dispute Resolution from OP Jindal Global University, Sonipat, Haryana. In her course of undergraduation, she participated in various co-curricular activities and extra co-curricular activities. She was an active participant in various moot courts and was a core team member of Geetaratan Moot Court Society. She has done internship under judges of Delhi High Court and was complemented her professional learning and skills. We welcome you, ma'am. Mr. Dhruv Sharma is currently preparing for his judiciary exam where he has cleared Rajasthan prelims. In the course of his undergraduation, he participated in various co-curricular and extracurricular activities. He was an active participant in various moot courts and was a core team member of Geetaratan's Moot Court Society. He is writing various books such as Fairyland or Fairyland Lost, which was the debunking myths and the uplifting rights, No Building a Watertight Container, which was the periodical amendment and varnishing privileges, A Feasible Step for Bridging Justice and People's Integrity, and many more. He has done internships under Chief Judicial Magistrate and 4 High Court advocates who have complemented his professional learning and skills. We are delighted to have you both of us with today. Now I request Shweta Garg ma'am to address the audience. Am I visible and audible? Yes. Thank you so much. Yes. Yeah. So hello everyone. My name is Shweta. And I thank Geetaratam for this great opportunity to actually have a direct interaction with you all. And I would encourage everyone, if possible, just turn on your videos so that we can actually know that we are interacting with. So first of all, let me start with a question. We have in our whole course, in our whole tenure, we have always asked this question that why law? Why did we opt for law? So can anyone please tell me that what was your mentality for coming in this career field? Anyone? Come on guys, let's make it interactive. I request all the students to please interact. They are your seniors only. And it would be good if we have a good interactive session. I also request everybody to put on your videos and so that the session is more interactive, like Shweta said, right? So everyone, please participate. And you can address me as Shweta. You don't have to call me ma'am or something. It's okay with Shweta. Anyone? Why law? What was your mentality? Yeah, Manisha, please. Yeah. Ma'am, actually, for me, choosing law was basically, I thought, law is something which is a key to most of the things we see around us. Like the society works on law and everything which we go around, it was working over law. So I thought it would be great if I know the laws of our society and knows everything about it so that I could be a better citizen and, work for it. Yeah, trust me, that was my thinking too. Besides that, I do not have to do maths, right? So law is something which changes, which is diverse in nature. It changes around us. Why we say that law is a fruitful subject, because it is very practical in nature. It helps you growth in mentally and your mind reflects to it. So when I went for law, I was not admired, or I was not into that I have to do law. It was just a thing that I did not got marks, so I just went for the law. So the thing is that with law is you need to be, first thing foremost, your books should be your best friend. Seriously, like one thing I've learned in my whole experience, what I gained is books should be your best friend. So when I was in my undergraduate, I'll tell you with my experience, what I experienced and how did I balance out things. So I was not into studies. Like I was not like kitabi kida or something like that. I was an average student, pehle bhi and now too.
So the thing is that when I started doing law, I focused more on practically subjects. Like I used to watch YouTube videos that how the law should be how we should understand law and what are the circumstances and what books help us. So when I saw YouTube videos, I tried to implement in my studies too. So I used to study books. I used to study bare acts. Bare acts are the key for everything. Like if you learn by heart the bare acts, you know everything about law, because that is the only thing we need to put in our exams too. So bare acts are very important. So I used to study in class like little bit besides any fun or that. But yes, I used to also balance out my things with participating in extra curricular activities. Like I did not know the importance of participating in that because I just enjoyed it, like doing painting and participating in cooking. So I just enjoyed that. That was the only only motivation in me. But wanted to pursue LLM. So when I went for interviews, for example, I'll tell you, I was accepted appointed as given the opportunity to have the interview in Symbiosis Pune. So they did not ask me that what was my marks or how did well I prepared for it. They did not ask me about that. What they only asked, what was besides study, what you did in your whole tenure. So I told I have something, so I told them. In fact, they also asked me that to show the certificates, like they want me to put the certificates in front of the camera and tell them that yeah, I did participate in that and etc. And also they asked me to give me a soft copy of all the scanned documents. So yeah, participating in extracurriculum is very important, but you have to focus on your studies too. Like from my experience, I can only tell that participating in moot courts was one of the best thing which helped me in growing in law. Like it helped me in public speaking and having this confidence in me that I can actually speak here in front of like 50 students. So moot court participating in moot courts is very important. They'll give you an exposure. It is my experience, like everyone have a different approach. I have this approach in my life, so I followed that. And also internships, we have compulsory internships. Let me tell you, when I was in my first semester, after my first semester I did my first internship. So everyone was like that, why did you want to do the internship initially? You could have wait, or you don't have to do so early. But right now I'm so happy that I am able to tell that I have done, like I have the internship experience of 41 weeks. So it actually counts. I did not sit idle. I did not relax in my holidays. Whenever my exams get over, I go for internship, whether it be under advocate or any commission, because it is very important for us to do the internships, because we actually get to know that what we are dealing with. Because law in books is something else. Like we all watch movies, like my relatives used to say कि तुम्हें तो यहाँ पे खड़े होके बस ये बोलना होता होगा, and you don't have to face that difficulties like we watch in movies. And we only know that who have done the internships and who have actually seen the courts, we only know that what struggle we actually face in courts. So internships actually give us that insights. It tells us that how we need to implement what we are studying in actual practical life. So always start, my advice is always start with the district court, because district court is where we actually start with the ground root level. It is a seed for everything what we study, because we should know that how to case a file, or how to interact with judges, in fact with the advocates, because there are so many advocates who you get to know about them and have interaction with. So
internships are like very important. So in my whole undergrad, I did various moot courts. I participated in organizing committees. I went for that. You can always go for, like, my friends used to say ki, what a time waste is that you are going for organizing committee. But I only know in my personal aspect that how it helped me in knowing things, because you have to call so many people, you have to bring participants. So it is very important to participate in everything. If I talk about studies, law is something that we need to keep pace on. You need to watch YouTube videos who can give you journal knowledge. You need to watch you need to study at least an hour. When I was studying for CLAT, in fact, not only for CLAT, in fact, for judiciary or PhD or LLM, everything, only those people, I used to see the videos of people who got 99 percentile, 98 percentile. They always say that we crack it, we were able to crack it because we could recall everything we had learned in our undergraduate. So now you can understand that how it is important to know every aspect of law, to know everything written in Bear Act. Because if you will start, like I personally, I did not start. Like I took very lightly. I was like that, yeah, paper to pass ho hi rehna. Why do I need to, go in so much core or study so hard? But abhi, like from first semester, second semester, if you can able to recollect everything in future, it is best. So study hard, uh, try to study hard, try to make notes and revise them daily, and do not study for exams, because IP exams are something, they do not test your internal knowledge. They are like, they give you one question and they tell you to answer it. That's it. This is something you do not, it's not your personal growth, your mental growth. The only growth you can have, like you can only grow by going beyond exams. ये सोच के पढ़ो that you are studying for your entrance exam जो तुम्हें judiciary के लिए देना है, or you have to give for your LLM. Okay, do not only limit yourself with the exams of IPU, right? So, like, this was my approach, and after when I went for LLM, uh, I got to know everything that I faced so many struggles that I need to revise everything from the core. If I want to go for contract, I need to learn from what is contract, how it is made, etc. So yeah, I did spend a lot of money in coaching, but let me tell you, you can spend thousands, lakhs in spending, going for coaching. But if until and unless you do not do your self study, you can actually, you cannot recall anything when you go for exams. So self study is very important. Like who am I dealing with? Like if this is first year, you have an ample of time to stable yourself. Listen carefully, like this is really important coming from an alumni, because teachers always guide us with everything, and we uh, ignore it that teacher do not know this is our fun time or this is our masti wala time. So but if I am telling you this, yeah, that you need to study from the basics, you need to balance out everything, your social life, your internal life, everything, that means something, because this is very important. And also, if I go for when go talk about LLM, try to if you are going for a job, try to do as much as personal test. Go for personality test, go for logical reasoning test. It is very important for you to develop your logistics, your aptitude. Because if you go like I went for Tech Mahindra, this was the first time when I was selected as for the online assessment, and there I got to know that how these assessments work. If I go for personality exams or critical thinking, so it stands very important. Even if you go for any exams, like any competitive exams, they actually ask you this. In fact, UGC net, which is gaining popularity and everyone want to do UGC net,
paper 1 deals with only aptitude, only logical reasoning. They do not ask you about law. They do not ask you about that. They only ask you about logical reasoning. So now you can, get to know that how it is important to balance out everything. Law is keeping yourself updated daily. Read newspaper, purchase the books like Manorama. They are very good for general knowledge. They and You should have a book of constitution. A constitution book should always be with you, because the constitution is the mother of all, father of all, land of all laws. So constitution, studying constitution, its bare act is very important, because it gives you branches of everything. Then criminal law, IPC, etc. This is very important. So uh, this is like, all I want to say is work hard. Working hard is very important, and doing internships is very important. Participating in various activities is very important. Do not think about that whether it be like beneficial in my future or not. It doesn't matter. Study for now and it will pay off in future. Like when I was doing my internship in judges, like when I was in second year only, I was said that why are you doing internship under a judge? This was not this will not benefit you in any aspect. But now, if I show my CV to anyone, to any recruiter, they are actually, they admire me, they appreciate that wow, you have done your internship under a judge. This can help you in litigation. So everything you do is not a waste. Seriously, if do not think that this will, like I cannot pass a test. If you do not pass a test, it's fine. Yeah, it's fine. Like, this is not end of the world. Like, I have listened so many people talking about AIBE, that this is the easiest paper. यार अगर ये pass नहीं हुआ तो क्या किसी को मुंह दिखाएंगे? Like, this is all, what this is not, this means nothing. If you do not pass that easiest test, it's okay. It's not end of the world. Like, I have seen so many friends that who are like literally, in depression, that we did not able to pass. Just do not, just move on. See where did you lack in that paper? Why did you not pass? You learn about that. Keep yourself updated, and try to apply that skill you have gained in future. So it will help you in every aspect. So the last line would I say that work hard, be true to yourself, do not do anything just to showcase, because if you're gonna fake things out, this will not benefit you. So that's it. Just ask me anything if you want, any query regarding LLM, or how to prepare, or how to go in that direction, anything. Ma'am, would you mind if we take up the questions after Dhruv sir? No problem, no problem. Okay, ma'am. Thank you. Now I would like Dhruv sir to please address the audience. Hello. Yes, sir. So, good afternoon to everyone. It's a good day and a good start that we all are here, and this opportunity is given to you and me also. So, as the Shweta has given you the peripheral of LLM, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो अलग बात है, सुना कम बच्चों ने है. Let's go. There is a basic question that is no more res integra between us. I will say, what make you think like you can be judicial officer? What make you think? What qualities you think? Is anyone there? Ranchhod Das brain किसी का हो? 3 Idiot वाला? Is there anyone? So, I think सब मेरी तरह ये backbencher, ठीक है? It will work it out. मैं भी backbencher ही था, मैं भी ऐसे ही था, चला के छोड़ देता था. But I will give you a few of the principles which I have learned from my teachers also, from the judicial officers also. Like, first, go find out some good material stuff, and it should not be like मैं किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ लेता हूँ. मैं मना नहीं कर रहा, पढ़ो, but जाओ कोई बुक देखो, कोई अथॉरिटी बुक देखो, like रतन लाल and धीरज लाल for evidence.
like KD Gore for IPC, go and find some authorities book, like which Supreme Court and High Court are referring to the person in their judgments. Go find those books. Once you get the good material, make your mentality that you have to study. It's not like कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ूंगा. There should be a resistance and there should be no resistance and a continuance, I will say. Then try to make your study hours 6 घंटे स्टार्टिंग में करो. मैंने भी 5 पेज से स्टार्ट करा था 1 साल पहले. सिर्फ 5 पेज पढ़ता था और मेरे को लगता था मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊंगा. दिस वाज द रियलिटी. बट आप काम करो, 5 पेज से स्टार्ट करो. स्टार्ट विद अ गुड बुक. सेल ऑफ गुड्स के लिए मुल्ला है, आप मुल्ला रेफर कर लेना, पुलॉक एंड मुल्ला. एंड once you go and find the study hours, there has been the raise. 6 hours पहले पढ़ा तुमने, फिर उसके बाद 10 करा 2 महीने बाद या 6 महीने बाद. Then have a daily check of your own self. Go in the front of the mirror and say, हाँ मैंने आज इतना करा है. Just be honest to yourself. You can cheat me, your parents, or any of one. But once you are cheating your own dream, it will not work it out. End में जाके zero ही हो जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं हाथ में. Then where I was lacking in the prior in Haryana exam, in Haryana judiciary, I was not doing repeated revisions. There was no revision by my side. So make sure that you are doing the repetitive revisions. Revision बहुत जरूरी है. अगर तुम सब्जेक्ट को उठा रहे हो, तुमने सोचा एक बार ही पढ़ लेते हैं काम हो जाएगा, 10 बार ही पढ़ लेते काम हो जाएगा. मेक श्योर तुम्हें इतना याद हो जाए कि कल को तुम 2 साल ना पढ़ो तो तुम्हें वो चीज याद रहे. जैसे हमें दोस्तों के नाम याद रह जाते हैं, किसी मूवी का सीन याद रह जाता है. सो मेक श्योर उतना तुम्हें याद रह जाए. एंड देन गो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट. कोई सा भी पेरेक्ट उठाओ. सबसे पहला क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, एंड देन द लास्ट सेक्शंस व्हिच आर रिपील्ड एंड सेविंग सेक्शंस. 1 से 2 क्वेश्चन तो उससे हमेशा ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से आ जाता है. देन गो फॉर द इंडेक्स पार्ट. इस बार ये हरियाणा में यही हुआ था. मैं अंदर से पढ़ के चला गया था कंसेप्ट को. हरियाणा में बाहर से सेक्शंस के हेडिंग्स पूछ रही थी, तो वहां पे मैं रह गया था. गो फॉर दैट वन एंड मेक फ्यू प्रिंसिपल्स. अगर किसी को लिखना है, कॉपी पेन उठा लो, मन कर रहा है तो. बट मेक फ्यू प्रिंसिपल्स फॉर योर लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर द जुडिशरी, बिकॉज knowledge can give you the respect, and this is what you are going to get. Knowledge can give you the respect, but you're working hard for your dream. So your hard work will going to give the dream, but not this knowledge. So work hard for your dream, not for this कि मैं आज एग्जाम दे देता हूँ. मेरी गलती क्या थी और जो बच्चे भी करते हैं, they study for the exams only. कि आज मैंने पढ़ लिया तो पेपर पास हो गया, बस बात खत्म, चलो पार्टी करते हैं. तो ये नहीं समझ पाते कि जिस लाइन में हम हैं या जिस स्ट्रीम में हमें, इसके बाद इसमें ही फ्यूचर है हमारा. Why wasting this time, your so potential time, I will say, so imperative time you are having, उसको ना खराब करते हुए. And make sure once you are studying for judiciary, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ वैसे, but make sure once you are studying for judiciary, your conduct, your each and every act and words do not debounce the moral of the society. Do not debounce the moral of the person standing in front of you. You are representing a judiciary and you are representing the law. So try to live with the law rather than going out and हाथ में बनियान उठाई या हाथ में शर्ट उठाई और घुमाने लग गए रोडों पे. ऐसे नहीं होता. See, it's a very sensible profession and a very respected profession. So try to live with it rather than taking a burden on it. And let's move to some few principles which I have made for myself. और कुछ आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना you can just डॉज कर देना जैसे अब तक करते आ रहे हो सारी बातें. The first is principle of sacrifice. Make sure that you learn the principle of give and take. Life is all about this. आप कुछ देते हो तभी आपको कुछ मिलता है. You have to sacrifice many things to get one thing. तो ऐसा नहीं होगा कि सब, कुछ बच्चे कहते हैं मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, कुछ बच्चे कहते हैं मैं सोना नहीं छोड़ सकता, कुछ बच्चे कहते हैं मैं घूमना नहीं छोड़ सकता. This is not the life. You have to sacrifice few things. It is the early age. अभी सेक्रीफाइस करोगे, बाद में कुछ मिल जाएगा, वरना करना तो है ही लाइफ में. सब कहते हैं 10वीं के बाद 11वीं में मिलेगा कुछ, कुछ कहते हैं 11वीं के बाद 12वीं में मिलेगा कुछ. अभी तक तो कुछ मुझे तो मिला नहीं. But all there is a change, as you can see. There is a change in the challenges which we face every day. There is a change in the mentality which we have, and there is a change of maturity which we have, how we see the life.
There is a very big change in this. 10वीं के बाद अब के बाद बहुत फर्क आ गया. And this is what the life is. And once you get the knowledge of this, कि मैं पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे पढ़ सकता हूँ मैं IPC जैसे मैंने आज पढ़ा. जैसे कुछ बच्चों की होती है, मेरी भी थी. 3rd ईयर तक मैं इंग्लिश का सेंटेंस ही नहीं बना पा रहा था. I was not able to speak. So मतलब इंग्लिश बोल नहीं पाता था इतनी सही से, not fluent. But what I have learned is rather than going for the newspaper, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. सब कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ो अच्छी बात है. If it work out for you, it is good. But मेरे लिए कभी मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया था. So what I used to do is मैं judgments पढ़ता था. Loudly मैं judgments को पढ़ता था so that I can develop my legal language. So that I have the knowledge of legal English rather than a simple English which everyone has. Like Shashi Tharoor. सब ऑक्सफोर्ड ही कहते हो इन शॉर्ट इंडिया का. बट वो लीगल साइड तो नहीं बोल सकता ना. So try to develop your legal English first. Then once you are developing your legal English, then go for the subjects. Get a mastery of the subject. एक बार तुमने mastery कर ली, जैसे IPC में you have taken 6 months or 4 months. Once you have done the mastery, you don't have to go after the books. You don't have to go after the judgments. You just only have to go after your notes, your self-made notes, your own hard work, and that will last for your own life until you die, I think. और जब भी मन करे छोड़ के भाग जाओ, अभी भी कुछ भी कर सकते हो. So there is a principle of sacrifice, as I have told you, and there is a principle, a term which I have made for myself is God, G-O-D. It's not like supernatural power कोई आके तुम्हें govern कर रही है. I'm not talking about the भगवान जी, ऐसे नहीं कह रहा मैं. God is something which I have for myself is थोड़ा सुन लेना ध्यान से, मन करे तो, वरना जब तक अभी तक इग्नोर कर दो, करते रहो. First is the greatness. You should have the mentality to achieve the greatness in any of the section of your life or any of the walk of your life. You should have the mentality to achieve the greatness in that thing. Either it is swimming or agreeing to do it, have the mentality to achieve the greatness. This greatness can be achieved by only one rule, that is obsession, that is O. This obsession, once you get obsessed of one thing, make sure that you will be misunderstood by everyone. Your homies will leave you. You will be not invited to the parties and to the outgoing or to the tours because you are obsessed to your dream. And this obsession is given by the dedication that how hard you want your dream. So G-O-D, make this term for yourself, write it down on any of the paper, or जिसके पास रणछोड़ दास का दिमाग है, रणछोड़ दास का दिमाग, Rancho's brain, वो तो अपने दिमाग में डाल ही सकता है. So have this term G-O-D, greatness, obsession, and dedication. Or you can say D for determination. And once you get this principle, that sacrifice in God, there is one more thing which I faced. Like there will be many of the students among you who they are financially sound, very well sound, but I'm also from middle class family. मैं ऐसी बात नहीं है कुछ ज्यादा ही अमीर हूँ. But what I face is like we feel ashamed. Never be ashamed of what you have. First thing. All it takes is once you have cleared your LLB, there will be a band around your neck that is for the advocates. And in the court, your knowledge will be checked, not which family you belong or where from where you are or what you have. So don't feel ashamed of it. मैं तो ऐसे पढ़ नहीं पा रहा, मेरे पास बैग नहीं है. पहले ये तो सोच लो आईपीसी पढ़ते कैसे है, यही नहीं पता तुम्हें आईपीसी कैसे पढ़ते, तुम्हारे पास केस आके तुम लाइफ की सामने वाली लाइफ की ऐसी तैसी कर दोगे. Try make sure that you have got the mastery in that. And we all live a tragic subdued life, I think. मैंने तो करी थी. So try to focus on yourself. Try to work hard on yourself rather than going after the crowd. When I was the backbencher, मैं जब पीछे बैठता था, मैं इसलिए नहीं पीछे बैठता था कि मतलब मेरे को पसंद था बैकबेंचर होना, वो तो दूसरी बात है, कौन टीचर तो बोलती नहीं है. But I used to be backbencher. What I used to do is just analyze the class. Why the people or why there is the crowd so much? What this crowd is going after? And what can I do in different way? I used to do this. मैं देखता था टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? What other thing can I do? Is there any theory that can I give? Is there any book that can I give? Or is there any project or any mood code that can I give? That I can give, sorry. So find out something different. Don't be the part of the crowd. अभी तुम्हें लगे
कि जुडिशरी कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अलग हो चुका हूँ, ऐसा भी नहीं है। या फिर ऐसा लगे सब पानी पी रहे तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, सब घर में सोते हैं, ऐसा मत करना। बट बी मैच्योर एनफ, अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक है भाई, ये भी तुम कर सकते हो क्योंकि तुम गिफ्ट से हो। हमें भी यही बोला जाता था। सो एंड let's move to one more thing, that is a good stuff that we all have is the brain. Make sure that you have to train it, you have to feed it, and you have to nourish it time by time. सब कहते हैं कि मैंने थोड़ा पढ़ लिया अब मैं कर सकता हूँ, या फिर इट्स नॉट लाइक बैंक की एफडी करा ली है, ये एक बार ही पैसे भर दिए इंटरेस्ट आता रहेगा। You go after it, you have to feed it, you have to revise everything again and again, then only you can achieve something, then only you can go and achieve judiciary like I did. मैंने जब आईपीसी स्टार्ट करी थी, मैंने आईपीसी की एडी उठाई, there was no one except my sir to guide me, not teach me, कोचिंग नहीं चलाते, he used to just guide me, it was me who was working hard on it. मैंने आईपीसी को उठाया, सबसे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आईपीसी में इतनी सारी जजमेंट है, मैंने ये सोचा था yes I will do it, for once I will do it, in 2 years, in 3 years, once I will attain the mastery in IPC, and once it is done, एक बारी तुम ये समझ लो, एक बारी तुमने आईपीसी कर लिया, then you are above thousands of persons की तुम एकदम ऊपर चले गए, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओगे, you can be good lawyer, you can be a good judicial officer, make sure तुम्हें मास्टरी तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करोगे। and people will talk behind you, जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे को सब कहते थे ऐसे पढ़ के ऐसे, मतलब जितनी बारी मैं गेट आउट होता था शायद उतने लॉ के सब्जेक्ट तुमने देखे भी नहीं होंगे अभी तक, तो इतनी बारी तो मैं गेट आउट हो रखा हूँ टीचर से, क्लासेस से। तो people will talk behind you, it's perfectly fine, मेरे बारे में भी बहुत बातें करते थे, but see where I am, मेरा प्रीलिम्स हो गया, वो बच्चे वहीं की वहीं है, कुछ कर नहीं पाया अभी तक मेरा कुछ। So don't feel like सब मेरे बारे में बात करेंगे क्या हुआ। Is there any doubt raised have been? Yeah, please go after it. We see. पाकिस्तान की कट ऑफ 72 थी, आपके कितने आए? मेरे 80 मार्क्स थे। Congratulations. अभी आप अभी आप मेंस देने जा रहे हो और अभी गुजरात की वैकेंसी आ गई है, तो अभी फॉर्म भरोगे? गुजरात में नहीं, मेरे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें लैंग्वेज चाहिए, इसमें सिलेबस तुम्हें देखना है, ये चीजें हमेशा याद रखते रहना। पता चला तुमने भर दिया आंध्र प्रदेश का और फिर तुम पैसे खर्च रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और फिर उसके बाद ये हो गया अरे यार मैं तो झंड हो गया, मेरा तो टाइम खराब हो गया, 2 months इज लाइक वेस्ट। इट्स बेटर मतलब वर्क विद अ शार्प ब्रेन आई कैन से, और वर्क स्मार्टली, लाइक किसी में कोई एमपी का निकल गया उसमें लैंग्वेज नहीं चाहिए तो एमपी के लिए पढ़ो, क्या जा रहा है। उत्तराखंड का निकला उसमें लैंग्वेज नहीं चाहिए, जैसे उत्तराखंड एंड एमपी का निकल रखा है, यस आई विल गिव इट, एंड डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं एक ही जुडिशरी करूंगा। यू हैव टू गिव एवरी जुडिशरी। यार सिलेबस अलग है, तुम किसी क्लर्क का पेपर नहीं दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है क्लर्क की रिस्पेक्ट नहीं है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट का पेपर दे रहे हो, दैट थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ लाइव्स आर ऑन योर शोल्डर। Yeah, please, Himanshi, yeah, please. Hello? I think Himanshi have raised her hand, so. Sir, can I ask something? Yes, please. Yeah. Sir, जय हिंद सर, मतलब मेरा भी सर सिस्टम थोड़ा आपके जैसा ही है या मतलब आप तो सही हो, मेरा आप सभी खराब है सर। मेरे को सर वो पूछना था, मतलब इंडियन आर्मी में एलएलबी करके सर कैसे जा सकते हैं? There is a JAG entry, मैं बताता हूँ, एक JAG एंट्री होती है, इसमें मुश्किल से शायद 7 से 8 पोस्ट निकलती है जर्नल्स की, शायद 13 भी निकल जाए, आपका लग गया। नॉर्मल सीडीएस जैसा पेपर होता है, 7 दिन का इंटरव्यू होएगा। यू हैव, हाँ थोड़ा सा आर्मी एक्ट पढ़ लेना, उसमें अपनी जीके तो बिल्कुल शार्प रखनी पड़ती है, अपनी एप्टीट्यूड एंड द वे यू सी द लाइफ, वो एक दिन में नहीं होता है या किसी कोचिंग सेंटर में जाके नहीं होता है, वो टाइम बाय टाइम तुम जैसे आज से शुरू करोगे, ये नहीं कि कल से ही मैं सोचने लग गया कि मैं मतलब बहुत बड़ा आदमी हूँ या मोदी की तरह सोचूंगा मैं या फिर केजरीवाल बन जाऊंगा कल ही, ऐसा नहीं होता है। बाय टाइम यू सी देयर इज अ बिग डिफरेंस इन योर कैरेक्टर, एंड दैट इज व्हाट सीडीएस वाले देखते हैं।
वो ऑन द स्पॉट तुम्हें बोलते ही तुम्हारी आंखों के मतलब पलक झपकाने के उससे ही बता देते कि ये क्या सोच रहा है दिमाग में, या इसको डर लग रहा है या फिर ये कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है। जब मैं एलएलबी में था तो मैं सोचता था कि मैं जुडिशरी करूंगा, फट तोते की तरह सब कुछ बोल दूंगा, सब कुछ आएगा मेरे को। ऐसा नहीं होता है। दे सी हाउ काम यू आर फॉर योर ओन लाइफ एंड हाउ मेच्योर यू आर। मतलब how can you assess your team, how can you get motivated, how can you motivate your own team to do the work। तो ऐसे ही होता है। आपने any दिया other है question सर is जैक के पेपर? no I am not that much interested। मैं इतना नहीं कर सकता भाई, इंडियन आर्मी है हमें बचा रही है, ठीक है, मैं कोई और काम कर रहा हूँ इसलिए। या प्लीज आव्या। So I have one question, like when you're speaking about coaching centers and everything, so what had been your strategy for working for judiciary on your own, no? Like what have you been doing on your daily basis, and like how are you planning for your mains now, or is there any provision like you can help us with that today? So that's Yes, what I was. just take out some pen or pencil, whatever you have, for the phone. Make sure that 7 hours sleep, there should be a 7 hours sleep। What I have did as मैं किसी कोचिंग सेंटर नहीं गया, खुद से ही पढ़ा था, खुद पे ही वर्क करा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइफ है, कोई और नहीं गवर्न करेगा इसको, कोई और नहीं बताएगा तू इसको ऐसे पढ़ या वैसे पढ़। कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, यू गो एंड मैं ये मना नहीं कर रहा, बुरी बात है, ऑल इज जुडिशरी इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ लाइफ। सी advocate, any of the post is a medium of life। You get the currency note, you eat the currency note, and that is how the life is going। But judiciary, you have the life of lakhs of the people on your shoulder, so that is where you get the respect। And पहली चीज तो सुबह सुबह उठो, आराम से 7 घंटे सो, 7 से 8 घंटे, पर 8 घंटे से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम इज 8। Then do some meditation, because the focus is more or less important in the interview, and that is also for the life के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये नहीं मैं सिर्फ इंटरव्यू निकाल दूंगा और जज बनने के बाद मैं वहां पे हंसने लग जाऊंगा सबके सामने। हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू थिंक यू आर रिप्रेजेंटिंग होल जुडिशरी। इवन यू आर ए स्मॉल पार्टिसिपेंट, आप बहुत छोटी पोस्ट पे हो, आप हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो, अब बात में हंस नहीं सकते, या बात पे किसी के साथ घूमने नहीं जा सकते। जाओ, करते हैं, कई सारे जजेस करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बट सी तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं लगता, ये मेरा मानना है। मेडिटेशन करी, फोकस करा, देन गो आफ्टर द मटेरियल व्हिच आई हैव सेड, गुड मटेरियल। जाओ, गुड मटेरियल ढूंढो, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल लेकर आ जाओ, बट मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग बाय योर ओन सेल्फ। तुम्हें एक सेक्शन पे, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड 2 years back, when I started for sale of goods, there is a section called document of title something, को अभी पक्का नहीं पता है, section 2 subsection 4, I think it's section 3, document of title is there, and there is delivery order term, and it took me 3 days to understand what is delivery order, and still I am not perfect। तो ऐसी चीजें होगी, ये नहीं होते है कि आपको किसी ने बता दिया, आपने सीख लिया, उसके बाद क्या, कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जज के सामने कि कोई आपको, कोई कोचिंग सेंटर ने पढ़ाया नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, कोई सी बुक में था नहीं, क्या करोगे? सो गो वर्क हार्ड एंड अपने ऊपर ही वर्क करो। बेसिक तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, उनका मटेरियल ले लो, इट्स परफेक्टली फाइन, नो डाउट, बट ट्राई टू लर्न बाय योर ओन सेल्फ। देन मेंस, फॉर मेंस आई विल से द प्रायर इज, एज आई अर्लियर सेड, प्रायरली आई सेड कि अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो, नॉट कि इंग्लिश आ गई और मैं बोल दूंगा, लिख दूंगा, कुछ भी ऐसे नहीं होता है, वरना सब आज जज बन चुके हो। लीगल लैंग्वेज होती है एक, देयर इज अ पैटर्न हाउ यू राइट एन आंसर राइटिंग भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं होता कि हाँ मैं आज लिख दूंगा, मेरा काम हो गया, मैं जज बन गया, क्या पता मैं मेंस में रह जाऊं, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी चीजें होती है, आपको हिंदी भी सीखनी होती है, आपको जीके भी सीखनी होती है, तो आपको पहले तो आंसर राइटिंग से पहले आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। लैंग्वेज में बुक्स नहीं बताएगी लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स बताएंगी लैंग्वेज, ना बुक्स ना टीचर्स, जजमेंट्स बताएगी जो लैंग्वेज बताएगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस आर यूजिंग, see the language of how they are interpreting the judgment or how they are writing whole of the judgment। Every judgment is a kind of legal paper, legal research paper, I will say। There is research on that, there is a fact and the situation, and you go after it, there is the unfold story of the prosecution, then the defense, and then you go and see this is how they have written the words,
the sense which they are trying to make from starting to bottom, that is how the mains is. ऐसे ही मेंस हो सकता है मेरे हिसाब से, तो हो सकता है। और मैं तो बैक बेंचर तो हूँ, क्या पता मैं गलत होऊंगा। अब क्या पता इस बारी मेंस में रह जाऊं, बट नेवर लूज होप कि कभी तुम्हें लगे कि मैं 10 साल या 5 साल मैंने मेहनत करी और मैं फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं होता है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। यू कैन बी अ नाइस पर्सन टुडे एंड अ गैंगस्टर टुमारो। देयर आर मेनी पर्सन, इंजीनियर होते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं, एंड देयर आर मेनी पर्सन लाइक a gangster and a nice person tomorrow. So it's all up to you how you approach it, which mentality you have. It's all up to you. And any other question anyone want to ask? Yes, please. Yes. Excuse me. Actually, since you started with the Ranchhod Das example, right? So, Yes, what is your advice or a piece of something to the people? I think here we can find people more like Raju Rastogi who are Yeah, I was the one of Raju Rastogi. I was the one. I was the backbencher. मैंने Yeah. बताया था क्लास लॉ में इतने सब्जेक्ट नहीं जितनी बारी मैं गेट आउट हो रखा हूँ। फाइन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Exactly. So what is your piece of advice for people like them who have potential but they're afraid, to take a step? I have already said, never be ashamed. Like I was ashamed कि I cannot go out there with my friends. Like when I was studying, I used to come on my bike, or sometimes on my bike, or I had my personal bike, but I used to see people are having car and they are going out, and I was ashamed. But what I have learned is, तुमने एक बारी LLB कर ली, तुम्हारे गले में एडवोकेट का नेक का वो ब्रांड आ गया है, कोर्ट तुम्हें नॉलेज देखेगा। ये सब कहते हैं ज्ञान देने वाले, इंस्टाग्राम पे भी ज्ञान बहुत मिलता है तुम्हें, ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला नहीं दे रहा तुम्हें। इट्स अप टू यू हाउ, मतलब तुम कैसे उसको देखते हो, इन व्हाट कंटेक्स्ट यू टेक इट, इट्स अप टू यू। यस गरिमा, प्लीज। गरिमा एंड 3 others have raised their hand. Good evening, sir. ठीक है, तो प्री के लिए ऑब्वियसली ये है कि सिर्फ बेराइट पढ़ने से तो होता है कि मतलब बेराइट पढ़ोगे तो यू फील कॉन्फिडेंट, बट जब तक क्वेश्चन ना लगाओ तो फायदा होता नहीं है। तो बुक ली थी कोई जुड़ी? यस, देयर आर नो, मैंने कोई बुक नहीं ली है, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने कोई बुक नहीं ली है। यस, मैंने नेट पे रिसर्च करी। एक ना मेंटालिटी होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बारी तुम 6-7 महीने पढ़ोगे खुद से और तुम बुक्स लोगे, जो स्टडी मटेरियल होता ही है, कहीं से भी कोचिंग से ले लो या फिर कहीं से भी ले लो, अथॉरिटी बुक्स उठा लो, तुम एक बारी पढ़ने लग जाओगे। और एक बारी तुमने टेस्ट सीरीज देख ली, जैसे मैंने नेट पे टेस्ट सीरीज ढूंढी थी, मैंने किसी से ली नहीं कभी, and I'm still teaching few of my friends of CCS and they have cleared Rajasthan mains with me, Rajasthan pre with me, so it's perfectly fine. मैं उनके टेस्ट सीरीज लेता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, वेट अ सेकंड यार, मैं इसको बता दूं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुमने टेस्ट सीरीज देनी जरूरी है। तुम एक बारी बेरेक्ट को पकड़ो, एक बारी तुम प्रीवियस ईयर देख लो, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ना क्या है, आता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक बारी खुद पता चल जाएगा। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, एक बारी तुम जाओगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्या है, ये पेपर है क्या, इन विच वे दे आर आस्किंग। एंड अभी तक पैटर्न क्या चलता आ रहा था, अब हरियाणा में पहले पैटर्न चलता था दिल्ली वाला, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते थे। इस बार क्या करा, बार से क्वेश्चन पूछ रहे और मैं रह गया हरियाणा में। सो इट्स परफेक्टली फाइन। या प्लीज, एनीवन एल्स रेज देयर हैंड? Excuse me, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Sorry, good afternoon. So, sir, when did you start preparing like for judiciary? After you completed your law, or like during the complete doing your semester and all? It's a perfect question. I'll say तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें दोस्त भी मिलेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लियो प्रिपरेशन। The best time is, I will say, second year से अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। Third year and fourth year you will see you have grown a lot, you know how to read better, then you can go for the coaching or wherever you want to go. In the fourth year I started, fourth year and for like 8th semester I started in 8th semester, 9th semester, 10th semester by my own. Because because everyone used to say if you are like doing judiciary, you should start from the beginning only. If do not waste your time, do not waste your attention on. Yes, आप प्लीज, ऐसा सब कहते हैं, मेरे को भी बहुतों ने कहा था। ये ऐसा नहीं होता है, जब तक चांस नहीं लोगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे।
there is a principle which I believe: no one is perfect, but you can be perfect once you accept the repetitive failure. Once you repeat, fail, at one point of time you will be perfect. Like for judiciary, you are going, yes, you can ask. Thank you, sir. Yes. So you just mentioned that you've been providing test series to some of your friends who have cleared judiciary with you. So like, I just wanted to ask, like, what kind of test series are you providing, and is there a provision for the others or something like that? It's not something like मैं मतलब कोचिंग दे रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट हाँ मैं मतलब गूगल फॉर्म्स पे अपने मतलब जैसे मैंने बैठ गया जस्ट चेकिंग माय मेंटालिटी, मैंने कई सारे फ्रेंड्स को अपने दिया कि 6 बजे आज पेपर है, 6 बजे सब बैठते हैं, 7 बजे तक पेपर देते हैं, एंड फिर उसके बाद सब मतलब मैं ही ऑर्गेनाइज कराता रहता हूँ पेपर, तो उनके लिए तो इट्स ओपन फॉर यू आल्सो। नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आओ और पढ़ो मेरे से, भाई मेरे पास भी टाइम है, मेरे को भी मेंस लिखना है, ठीक है, बट या टेस्ट सीरीज होती है, तुम पढ़ सकते हो, मतलब एक बार एनालाइज कर लोगे, तुम एक दो बारी पेपर दे लोगे, यू विल गो एंड सी एवरीथिंग। एनीवन एल्स वांट टू जस्ट Sir, how can we take that exams? How can we take that? How can we take that? Like you're saying, na, you give test series. So how can we also take that test? I'll say you can go find on your Google. अगर तुम्हें Google पे मिलता है, it's well and good. अगर तुम्हें कहीं और मिलती है तो well and good. अगर तुम्हें कहीं कोचिंग सेंटर्स में मिलता है, well and good. What I used to do is मैं अपने दोस्तों में मतलब टेस्ट को बांट के मतलब गूगल फॉर्म्स बनाकर जैसे आईपी लेती है वैसे ही करके वैसे करता था। So you can have my number from any of the teacher. दे देंगे, पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी पढ़ लो यार, पढ़ाई तो करनी है, आज नहीं तो कल पढ़ना है। Yes, please, Garima. Yes, please, Avya also. What? Yes. Yes, please. Is anybody else asking the question or shall I continue? Yes, sir. Sir, हम राजस्थान जुडिशरी देने के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं? In the last semester, you are eligible. मेरे साथ हुआ था, मैं भी एलिजिबल हो गया था, पर कोरोना बहुत अच्छा आया, चाइना का बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट आया जो लास्ट तक रुका, वरना चाइना का माल तो चले तो आज, वरना चांद तक, वरना चले शाम तक, ऐसा ही कुछ होता है। कोरोना आया और मेरा अटेम्प्ट रह गया जो लास्ट था। There might be some students in the last semester go and give the exam. आई गई है शायद नोटिफिकेशन उसकी, राजस्थान की 2020 की, 2022 की आई थिंक। तो अपना पेपर दो, अपना लास्ट सेमेस्टर वाले एलिजिबल हो जाते हैं, सारे नहीं होते हैं क्योंकि तुम्हें अपनी मार्कशीट देनी होती है। यस सौम्या प्लीज। Sir, after the fourth year or in the fifth year? Fifth last semester 10th one. Okay. Can you please repeat the names of that books that you were saying? Books name. अब मैं सारी बातें तो नहीं बताता यार, पर लिख लो, इट्स गुड फॉर यू, थोड़ा पढ़ लोगे। केडीगोर पढ़ लो आईपीसी के लिए, then go after the अवतार सिंह and रतनलाल धीरजलाल for evidence, and torts के लिए तो आर के मांगे है, that's enough, and टीपीए के लिए आई थिंक जो तुम्हें बुक रेफर होती है उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर टीपीए से 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन उसमें से वहीं से ही आएंगे, उस बुक से ही आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। बुक एंड डायरेक्ट, कोई जजमेंट भी नहीं आती, जो जजमेंट लिखे इट्स फाइन है ना, और इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा भाई, सॉरी। ढूंढो और पढ़ो, यही मैंने करा था, मेरे को भी कोई नहीं बताता था, मैंने भी ढूंढा, मेहनत करी और पढ़ो। अब देखा सबने ये पूछने लग गए, यस नहीं। Okay, thank you. So, This mentality. I have an opinion-based question from both of the guests here. Like people say, whenever you prepare for judiciary or somewhat like that, or I believe people who are doing law, many of them will be, thinking to go for civil services like IAS and IPS. So, like the syllabus of them is pretty much different, but people consider that the syllabus for both of it is same. So what is your opinion on that? Like we should go together for it, or you would like? I'll say one thing. घर वालों ने बोला भी होगा तुम्हारे, एक नाव में पैर रख लो, जिंदगी चल जाएगी। This is the reality.
एक नाव में पैर रखो, एक बार ही सोचो, क्योंकि दे आर बोथ सेपरेट पिलर्स, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड वन इज जुडिशरी. दे हैव डिफरेंट कन्वर्सेशन एंड डिफरेंट वे टू लुक द पब्लिक. एक ऐसे देखता है कि उसके केस में सच्चाई कितनी है, एक ऐसे देखता है कि क्राइम कराई किसने है पहले. तो सो देयर आर मेनी स्टेप्स. आप स्टेप वाइज जाओ. आपको देखना है, अगर आप आईपीएस सोच रहे हो, आईएएस सोच रहे हो, देखो मतलब थोड़ा आई गो सम इनफॉर्मल वर्ड्स, बट अपनी औकात के हिसाब से पढ़ो रेगुलर. अगर नहीं है तो मेहनत करो और बढ़ाओ. अगर तुम चाहते हो कि आईएएस बनना है और तुम बैक बेंचर हो मेरी तरह, या फिर जुडिशियल जज बनना है, बैक बेंचर हो, मेहनत करो और बढ़ाओ. देयर इज नो शॉर्टकट. आओगे 2 दिन पढ़ोगे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, एक बार ही फीस दे दी, मैंने पढ़ लिया, हो गया जज, हो गया, बहुत अच्छी बात है. देखो किस्मत तो सबके साथ है. मेरे साथ भी कई सारे दोस्त है, पढ़ते हैं नहीं, जय माता दी कर देते और हो जाते पास. कुछ नहीं कर सकते उसमें. बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. तो मेहनत कर लो थोड़ी सी, काम चल जाएगा. अभी नहीं तो कल करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी ये चीज ना मेंटालिटी ऑफ एवरीवन हो चुकी है इन वास्ट कंटेक्स्ट. इवन व्हेन आई वाज डूइंग लॉ, जब मुझे बोला गया कि लॉ कर रहे हो, अच्छा तुम तो जज ही बनोगे, लाइक आई वाज लाइक दिस वाज सो टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स वन थिंग कि अगर लॉ करोगे तो जज ही बनोगे. बट इट्स नॉट ट्रू. मतलब दिस इज ट्रू दैट एक नाव पे सवार होना इज वेरी वो, बट मैंने बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट देखा है जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है. दे आर लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स वन थिंग, डेडिकेटेड टूवर्ड्स वन थिंग. इट इज मतलब बहुत अच्छी बात है, यू शुड बी. बट अगर लोगों का नहीं क्लियर होता ना तो दे आर लॉस्ट. दे आर लाइक कि अब क्या करें, अब ये हमसे नहीं हुआ, अब खाली बैठे रहे, ऐसे वाली फीलिंग आती है. सो द थिंग इज दैट यू शुड बी इंक्लाइन टूवर्ड्स वन थिंग. एक तरफ अपना दिमाग रखो, बट ये भी सोचे करो चलो कि अगर ये नहीं हुआ तो इस पे दोबारा ट्राई करना है, और वी हैव टू डू समथिंग एल्स. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ लाइक जो आईपीएस वगैरह है, लेट्स कीप इट सेपरेट. अगर मैं जज का बोलूं, इफ यू डू स्टडीज फॉर जज, अगर जज का पेपर निकालने के लिए जो मेहनत तुम करोगे ना, अगर वो पेपर नहीं निकला ना तो तुम्हारा यूजीसी नेट तो जरूर निकल जाएगा. Because I have seen the previous year's question papers and also of judiciary. दोनों में कुछ ज्यादा differences नहीं है, but उनको निकालने के लिए you have to go to the core subjects. मतलब तुम्हें ये तक पढ़ना पड़ेगा कि ये अगर if I am मतलब concentrating on सिर्फ murder, तो मर्डर से रिलेटेड हर एक चीज, इंडिया का लॉ, बाहर का लॉ, क्या क्या रिलेटेड है, एवरीथिंग. सो द थिंग इज दैट कि अगर वो पेपर नहीं निकला तो देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे तुम अपना डायरेक्शन टुवर्ड्स लेके जा सकते हो. एग्जैक्टली. अब जज बन रहे हो, वेल एंड वर्स, ठीक है. मेरे पास भी सब लोग ये मुझे बोलते हैं कि दे कम एंड दे से कि जज ही बनना, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग अ जज. सो वाई, मतलब मैं अपना क्यों फोकस उस पर रखूँ. नाउ आई वांट टू डू पीएचडी, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीएचडी, आई एम ट्राइंग टू क्रैक एनईटी. सो माय वो जो डेडिकेशन है वो उस तरफ है. बट आई नो कि अगर उसको पढ़ने के लिए जो डेडिकेशन मेरे अंदर आ गई, इफ आई हैव दिस क्यूरियोसिटी टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी लॉ, तो आई कैन इजीली क्रैक जुडिशरी और समथिंग एल्स. तो सबका जो डेडिकेशन लेवल है, वेदर इट बी जुडिशरी, यूजीसी नेट, आईपीसी, आईपीएस एसेट्रा, सबका डेडिकेशन करने का तरीका, सबका अप्रोच सेम है, क्योंकि एवरीथिंग. हाँ जी ध्रुव. Let's ask some questions they have raised. Garima, Siddharth and Srishti Bansal, you can. Yes, sir. Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. Actually, I want to ask about the corporate law. What are your views about the corporate law, other than judiciary? Ask from the Shweta. I don't know corporate law. Shweta can guide you. Shweta? Shrishti, right? Yes, ma'am. Can you just ask again, like what do you want to know about corporate law? Basically, if I
ask about, if I tell about me, I am still confused with, in which direction I want to go to. Either it is judiciary or it's corporate. So I want to know about corporate. How is corporate law today in India, and what is its position? And if I choose as my career, then what sort of benefits could I expect from it? Yeah. So one thing, corporate law is booming. ठीक है, corporate law is something जो, लेकिन it is booming, but secondly उसमें बहुत भेड़ चाल है, to be very honest. Like everyone wants to do, they want a job in corporate law. Like when I was preparing for my LLM and मुझे वहाँ पे अपना specialization submit करना था, everyone guided me and told me that go for corporate law. Like मेरे साथ ज़्यादातर friends, everyone is doing from corporate law. अब कॉर्पोरेट लॉ में हमारा लाइक काफी फ्यूचर है, ठीक है. अब इफ अगर आप LLM उसमें कर जाते हो तो आपका और बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ स्पेशलाइजेशन इन दैट. फाइन. तो कॉर्पोरेट लॉ में आपका लाइक इफ यू गो फॉर रिक्रूटमेंट, अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो जैसे MNCs है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका. फाइन. The person who is like I know a person जिसने LLM करके बैंक ऑफ अमेरिका में she got a job and she got a job of I guess paralegal, right? तो she got the like package of 6 PA 6 lakh per annum. तो it's like कि corporate law में है आपका, मतलब आप जा सकते हो वहाँ पे. और अगर आप कॉर्पोरेट लॉ कर ही रहे हो तो आजकल लाइक ADR भी काफी बूमिंग है. लाइक व्हेन आई वांटेड टू डू, लाइक आई वाज कंफ्यूज बिटवीन IPR एंड ADR. अब कंपनी लॉ, IPR, ADR ये तीनों कॉर्पोरेट लॉ से आपका वो करता है. फाइन. तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, मतलब ADR इज समथिंग जो अभी कॉर्पोरेट लॉ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. Like when I am applying for jobs वगैरह, तो people are asking for dispute resolution people. तो आप उसमें भी जा सकते हो. तो corporate law का मतलब काफी अच्छा एस्पेक्ट है. If you want to go, it is benefit कि अगर आप LLM करके जाओगे तो वो आपको ज्यादा cherry on the top देगा. Okay, all right. Thank you, ma'am. No problem. Yes, other All right, I questions think we like can have the questions. Dhruv, I think we can have the questions at the end. Would you like to, tell us something else? And would you like, if you would conclude, then we can go for the question answer round. yes, Right, I think ma'am. that's it. I'll say कि see in the end ऐसे तो ज़्यादा ही बोल दिया, but sorry यार, आप सबका टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा, but you always have a choice, like ठीक है, there might be आपका फर्स्ट टाइम नहीं होता है, आपका सेकंड टाइम नहीं होता है, बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. डोंट गेट डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेशन में तो जाना भी मत, बिकॉज डिप्रेशन इज वन ऑफ द एस्केप रूट्स. अपनी हार्ड वर्क से भागने के रूट्स होते हैं सारे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मूडी हूँ. यू कांट बी मूडी इन वर्किंग हार्ड. व्हाइल वर्किंग हार्ड you can't be. You have to give 6 hours every day, and this is what I have done, and this is what I'm teaching to my few of my friends, like I can say. There have been sessions आपके जैसे ही होते हैं. We have the GD and we see how much we learn. आप हमेशा एक चीज याद रखना, कोई कोचिंग ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमेशा अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहना. When I was preparing, कोई मेरे से डिस्कस करता नहीं था, क्योंकि मेरी मेंटालिटी, मेरी नॉलेज उनसे बहुत डिफर करती थी. वो कहते थे सेक्शन 302 IPC, मैं कहता था सेक्शन 302 IPC क्यों? मलेशिया का भी पढ़ते हैं, अमेरिका का भी पढ़ते हैं, सबका पढ़ते, सिर्फ IPC क्यों? अब ये नहीं है सब कहते हैं कि ये वकील को क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि आप जाओ पानी क्यों पी रहे हो, हर चीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हो. पढ़ाता है घर से, ऐसे ऐसे मत करना. You have the reasonable and legit questions. So I will say you always have a choice. Don't get depression, don't get in depression or a loop, or don't leave yourself in a lurch कि मेरा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे, मतलब मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा. Go find some other post. APO भी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि आप एक बार जज के लिए पढ़ सकते हो. तो APO तो मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, APP बहुत इजी हो जाता है. आई विल से मतलब बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. मैं तो देख कर आया था, जैसे उत्तराखंड में मेरी GK 0 थी. उत्तराखंड में शायद अभी APO की 124 कट ऑफ गई थी, मेरे 113 नंबर बने थे, क्योंकि मेरी GK 21 नंबर आए थे, लॉ में मेरे 92 आ गए थे. I scored well. So you can do these things. बस इतना ही कहना था. You always have a choice and don't get in depression. Okay.
मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, और दोस्त बात नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं, या टीचर ने मेरे को गेट आउट कर दिया तो मैं क्या करूं। लाइफ है, चलते रहने दो। Okay, so can we now have some questions? Saranya, you were yeah, please. Yeah, actually, I was having a question regarding LLM. Like, is it fruitful to do LLM outside India rather than doing it in India? So yeah, this was my question. Yeah, Garima. Doing LLM from outside is always beneficial, but provided you go with a scholarship. Like, to be very honest, पैसे देके हर कोई जा सकता है, ठीक है, मैं भी जा सकती हूँ, तुम भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, बट उसकी ना वो वैल्यू नहीं है। अगर तुम किसी थर्ड पर्सन को, इफ यू आर टेलिंग दैट यू आर डूइंग LLM बाहर से विद अ स्कॉलरशिप, तो उसका इनफैक्ट तुम्हारा CV पे भी आपका एक अलग इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज इन द CV यू गॉट अ कंटेक्ट, तुम्हारा एक मेन हेडिंग आ जाता है, द स्कॉलरशिप्स गेन्ड, राइट। तो LLM करनी है, बाहर से करनी है, गो फॉर इट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट गो विद स्कॉलरशिप। लाइक राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन OP जिंदल, ठीक है, OP जिंदल का हर एक टीचर ऐसा है जिसने बाहर से या तो LLM करी है या फिर बाहर से PhD करी है, एंड एवरीवन हैज डन विद सम स्कॉलरशिप, ठीक है। तो जब हम उनकी बायो पढ़ते हैं ना, तो उसका बहुत अलग इम्पैक्ट आता है। लाइक वी आर वेरी इम्प्रेस्ड एंड वी फील ग्रेटफुल कि हम एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो यू कैन गो, देयर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, बट माय एडवाइस इज गो विद अ स्कॉलरशिप। So according to you, what are the best scholarships which we can be provided with? Like LLM, to be very honest, I did not go बाहर, मुझे बाहर नहीं जाना था, so I have no idea about the scholarships. लेकिन कुछ scholarships ऐसे भी है जो 100% scholarship देती है, like in Switzerland, I guess Switzerland में मिलती है, and in Paris too. So you can always Google it. See, one thing I'll say, scholarship वगैरह के लिए एक काम करना, अगर किसी को LLM करनी है बाहर से, एक पोस्ट होती है लीगल रिसर्चर की, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के नीचे निकलती रहती है, लीगल रिसर्चर की पोस्ट करना, वहां पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ जजेस से, अपनी बुक्स लिखो, PIL डालना स्टार्ट कर दो अभी से, समवन इज देयर, PIL डालो, अपने सराउंडिंग्स एंड सोसाइटीज को इंप्रूव करो, बिकॉज दे आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, वो पूछते हैं जरूर कि तुमने करा क्या अभी तक, ऐसा क्या करा। Yes, not NGO, you will get under it. Take your own step. जाओ और PIL डालो, खुद दिखाओ कि yes, I have the knowledge and I can improve the society. इधर सामने पार्क का गेट भी खराब है तो उसके लिए भी PIL डाल के गेट सही करवाओ। You have taken the step. क्योंकि आपका लीगल पेजेस पे नाम आने लग जाएगा, then you know कि सोसाइटी जाने लग जाएगी कि तुम हो कुछ ऐसा। But once you get the letter of recommendation from the High Court judge or the Supreme Court judge, मिली जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और तो तुम्हारी किस्मत है, जो होगा वो होगा। Okay, thank you. Yeah, any other question? Yes, next up we have maybe Taranjeet, because he was reading. Good afternoon, sir. Yeah, please. Sir, as you were talking about choices, so the choices must be in the same field, or we can change our fields. Like, for example, No, you can see, you can. When I was there, I never stopped exploring myself. When I was in the 4th year, I'll say the 3rd year end, I started painting सीखने लग गया था, मन ही नहीं कर रहा था लॉ पढ़ने के लिए, बट देखा तो पेंटिंग भी नहीं आ पा रही, कुछ और सिंगिंग करने की कोशिश करी तो आवाज बहुत अच्छी है मेरी, तो सिंगिंग भी नहीं कर पाया, तो आई थिंक रैप कर लेते हैं, वो भी नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी चीजें होती है, आई विल से, बट कोई भी स्ट्रीम तुम पकड़ सकते हो। देयर आर मेनी पोएट्स हु हैव डन दिस LLB, there are many great persons who have done LLB and then choose to some other stream. It's not a big Sir, and one more question, that if we are going for government services, so we should we take gap for LLM? Gap for LLM, it's not up to you, it's up to you. अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, अब तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम मैनेज कर सकते हो, अपना टाइम निकाल सकते हो, 6 hours for you, या कुछ बच्चे होते 4 घंटे में पढ़ लेते हैं, मेरे से 4 घंटे में नहीं पढ़ा जाता था, मेरे को 1 घंटा तो अपना माइंड सेटअप करने लग जाता था कि हाँ भाई आज पढ़ना ही है, अब पढ़ना है, आज जैसा भी कुछ भी आएगा सामने मैं पढ़ूंगा उसको।
तो अगर तुम कर सकते हो मैनेज तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो मतलब Taranjeet, ऐसी कोई बात। Taranjeet, right? Yes, ma'am. हाँ, Taranjeet, do you watch Shark Tank? Yes, ma'am. I have watched it. है ना? So there, like I guess in 2 episodes or 3 episodes, बहुत सारे lawyers भी आए हैं. In fact, you know, they have presented their product in that, right? अगर Yes, देखा ma'am. हो एपिसोड, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल कि मतलब आप बहुत सारे यू नो डाइवर्स, मतलब लाइक हमारी जो लाइफ है, जो करियर ऑप्शंस है वो डाइवर्स है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो. इनफैक्ट आई नो अ पर्सन हु हैव डिड लाइक LLM 2, और LLM करने के बाद शी डिड फैशन डिजाइनिंग, राइट? तो फैशन डिजाइनिंग में अब वो इतना अच्छा कर रही है दैट शी इज यू नो डिजाइनिंग द क्लोथ्स ऑफ पीपल हु इज वर्किंग इन रियलिटी शोज. So you don't have to limit yourself in that. You can go anywhere you want to. Just Google, बस हर चीज का अच्छा नॉलेज रखो. क्या उसका आगे, क्या उसका मतलब आगे हमारा फोकस है, मतलब क्या उसका कहते हैं ना कि कहाँ हमें वो लेके जा सकता है आगे, उसका अच्छी क्लियरेंस रखो. एंड इट्स ओके, यू कैन चेंज योर फील्ड एनी टाइम इफ यू वांट. बस करेज चाहिए, रिस्क लेने का वो फेथ चाहिए, तो सब हो जाएगा, राइट? Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, I think there is one question in the chat box also, and I think that should be the last question for the day because we don't have enough time for all of this. I also don't want to go outside India. In which college I prefer for LLM? Go for NLU. It's perfectly fine. और LLM करनी क्यों है? जज बनो ना यार. एक बार ही पढ़ लो, जज बन जाओ. Dhruv, LLM. Samriti, let me answer this. Don't listen to him. Let me answer. किसी को पढ़ना हो तो बता देना. You can have my contact number from the teachers. I'll give you. पढ़ाई कर लो पर. LLM वगैरह ये सारे escape routes है. I'll surely share your numbers, and I think it was a very, very good session. I can see the enthusiasm in students, and many of them are first-year students. I should tell you, Shweta and Dhruv, very good session. Please go ahead and just give me last 2-3 questions we are taking students, and then we'll end. And you can contact them personally also, right? Because shortage of time is there, right? Yes, ma'am. Anisha, just take Samriti, let मैम आप ही दे देना. मैम एक सेकंड मैम आप ही नंबर दे देना, मैं चैट बॉक्स पे लिखूं फिर. आपकी मर्जी है ध्रुव, आप जैसे भी करना चाह रहे हो. If you want to put it in the chat box, your wish. I would not stop you because they are your juniors. So there should be no connection of faculties between the seniors and the juniors, I think. So whatever you want to do, up to you totally. लिख देता हूँ मैं, उनकी मर्जी है. हाँ, एक चीज और थी. ऐसा नहीं है कि अब तुम बूस्ट अप हो जाओ इस सेशन के बाद और बोलो कि आज ही सारी किताब पढ़ लूंगा और मैं सब कुछ कर दूंगा और फिर चाइना का बम लिख लो फुस्सी अगले दिन. ऐसा मत करना. कीप इट रेगुलर पेस. हर दिन करना, हर महीने करना है. Once in 6 months you will see there is a big change which I have noticed in myself. टीचर से पूछना मैं क्या था, बच्चे बता देंगे, सब बता देंगे मैं क्या था और अब क्या हो गया. You can all see. And it is not कि मैंने खुद से मेहनत करी है. There have been many other persons behind me who are teaching me every time for the life and for the judiciary. Even ma'am has told me, you taught me women in law subject. She has guided me many more things. So it's not I made myself. It's many other person made me. Okay. Yeah, Shweta, you can continue. Sorry. It's okay, Dhruv. मैंने चैट पे लिख दिया है. I thought इस साल तो तू खत्म करेगा नहीं. So I wrote it in the chat. सर आईपीसी सर आईपीसी की पूरी बेयर एक्ट कंप्लीट करने में मतलब कितना टाइम लगता है, जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई करेगा तो? मेरे को मैंने जब स्टार्ट करा था, सेल ऑफ स्टार्ट करा था, 5 पेज पढ़ता था 10 घंटे में. 10 घंटे में 5 पेज. ठीक है, तुम तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो. मैं तो 5 पेज पढ़ता था 10 घंटे में और ऐसा लगता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ. अब मैं 5 मिनट में 10 पेज पढ़ लेता हूँ. ऐसा हो जाता है कि हाँ, आई कैन गेट द समरी ऑफ दिस थिंग्स एंड दिस आर बस ऐसे कर देता हूँ. हो जाता है. तो ये नहीं होता कि आईपीसी में कितना टाइम लगेगा. मैं पहले से ही सोच लो 10 घंटे लगेंगे मेरे को, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. एक बार स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में तुम्हें 10 घंटे लगेंगे, वही 10 घंटे तुम्हारे 5 हो जाएंगे, फिर वही 3 हो जाएंगे. अब ये नहीं हो जाएगा कि तुमने रोबोट की तरह यूं करा और
में कितना टाइम अप्रॉक्स लग सकता है जनरली? I will say 15 days. 15 days are more than enough for IPC, I will say. Okay, sir. Thank you. So, sir, yes, anyone else? Yes. No, sir, I was just saying that thank you so much for clearing our doubts with such ease and fineness to both of the guests. There have been 2 hands left. एक बार कर लेते हैं, पूछ लेते हैं. Okay, I'll not take much of your time. तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई करना, इसके बाद मजी मस्ती मतलब हाँ एक रूल अपना बना लेना प्लीज. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा और 10 घंटे अपना घूम भी लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मंथ में कम से कम 30 दिन तो अपने निकालो पढ़ाई के. 28 दिन, 28 से कम नहीं होने चाहिए. और अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम 5 घंटे मतलब उसका हाफ एंजॉय करो. Either you do meditation or you talk to your family and work for your family's smile, I will say. मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते थे मुझे पढ़ते हुए देख के. ठीक है, तो so work for your family smile, your parents smile. तो हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना अपने लाइफ में. ये अभी नहीं कह रहा, आगे लाइफ के लिए भी कह रहा हूँ. उनको उन पे चिल्लाना मत. बहुत सारी चीजें होगी, तुम पढ़ोगे, मूड ऊपर नीचे होएगा और तुम सोचोगे भाई मैं ही क्यों. ऐसा नहीं होता है. तुम एक बार पढ़ो, एक बार समझोगे लाइफ को, then you will see your parents are there, not your friends, not your other friends like family we say ना. मेरी एक दोस्तों की फैमिली है, कोई साथ नहीं देगा. एंड में तुम्हें खुद ही पढ़ना है. या there will be one person, तुम्हारा एक सर होगा जैसे मेरे है. I have my sir, he is a judicial officer already. I respect him a lot, he is a living legend for me, I will say. But हाँ, ऐसी भी चीजें होती है, तुम्हारे साथ कोई रहता नहीं है, पर वो सर मेरे साथ है. So find that person who will be going to stand with you. Yeah, please, Siddharth and Bittu and Garima, Sharma. Okay, so hello. Yeah, please. Good afternoon. Extreme practical and perfect talk, I would say, and each word is so encouraging and meaningful. Thanks, both of you. So actually, I would like to ask, what true quality for a lawyer rather than a reading? Your voice is breaking. I say there's a noise behind you. Now, okay. Hello. Can you text it? I will say. Okay. Yeah, you can text it. I will say. I'll wait for your text. Yes, anyone? If you have any question. Anybody else having any question can either drop in the chat box or can come up and speak. Yeah, so we are having this last question from Bittu, and then I think we can end if Garima doesn't have any questions, right? So, Yeah, what two qualities for a lawyer rather than reading? Yes, I will say first, try to speak. Okay, you cannot be like a conservative person in this degree, in the profession which you are having. Try to speak. अपने मुंह से words निकालो. अब तुम ऐसे बोलोगे किसी का हमने वो तो काम नहीं होगा ना. You should speak first and you should analyze what other person is thinking of you. Calmness should be on your face. ऐसा नहीं है कि मेरी शक्ल चेंज हो गई है और मैं ऐसे डर रहा हूँ, पैनिक हो रहा हूँ और एक्टिंग हो रही है, या मैंने मूवीज में देख लिया जीनियस ऐसे ही करते हैं, दिमाग को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, मैं जीनियस हो गया. ऐसे नहीं होता है. You should see what the other person is having a thought and you should have the quality of speaking. The word should be out of your mouth, not inside. हाँ, मैं दबा के बैठा था, मेरा मन करेगा मैं जब बोलूंगा, क्या करूं, मौके पे बोला ही नहीं है. These are two qualities. I think there might be many other qualities, but what I think is this. So, thank you so much, sir and Manisha, sorry to interrupt you. But one thing I want to say to everyone, जिसको like who want to do LLM and who want to do PhD further, like who want to go in academics, just a quick tip that जितने
पेपर पब्लिश करवा सकते हो, प्लीज गो फॉर इट. Go, indulge yourself in research and paper publication, or try to publish your paper only inside those journals जो UGC recognized है. Only then it will be helpful. Thank you. Thank you so much, ma'am and sir. I thank our guest speaker, Ms. Shweta and Mr. Dhruv, for sparing their precious time for us. And it's perfectly fine. अगर किसी आखिरी पूछना है तो पूछ लो भाई. पर फिर इसके बाद ये मत करना कि कुछ आता नहीं. Am I audible? Time खराब. Yeah, please continue, please. Yeah. So first of all, thank you so much to both the speakers for giving us the insights into law per se. And I have two specific questions that I would like to ask Shweta. So the first one is you were talking about alternative dispute resolution. Siddharth, excuse me. You might call Shweta, but she is your senior, so respect her, please. Yeah, sure. And before senior, she is also a girl, so please respect. Definitely, sir. So, respected madam, I would like to pose two questions. First, could you give us an insight into alternative dispute resolution? And second of all, as you were continuing on the aspect of the other opportunities except for being a judge, because I would like to venture out into the possible opportunities in law, as there are different layers to law. So I would like to know about your opinion on the UGC net, the PhD, and the other alternatives available in the field of law. Thank you. Sure. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yeah. So, firstly, about alternative dispute resolution. Right now, quick words. ADR is booming. Okay? ADR is something which used to be less explored area. लेकिन right now, everyone is asking ADR for ADR. Like when I wanted to go for LLM and confused between IPR and ADR, so my advocate, I asked him for being a mentor. So I asked him कि मुझे क्या लेना चाहिए. So he just said me that, do you want to earn money? I was like, yes. So then he bluntly said कि go for ADR. So ADR is something which is actually, gaining its popularity. Even our Chief Justice of India, who is like motivating and encouraging mediation in, judicial system. So yeah, it is a very good area, and I think it is less explored. Therefore, more opportunities are there. So everyone should, give a think. जिससे भी LLM करना है, they should, give a thought about pursuing ADR. And secondly, UGC net is something which is like benefiting all those people who want to do PhD. It is very tough. Only if 100 people are applying, only 6 people are getting admission. So it have only 6% qualifying area, but it is very benefit. अगर मतलब PhD करना है, you should always go first to crack UGC net. क्योंकि if you are cracking that and if you are getting JRF, Junior Research Fellowship, तो you will not have this burden, कमाने का burden, that मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ और मैं पढ़ाई किए जा रही हूँ, because you will be getting 35,000 to 40,000 while you are studying PhD. So UGC net should be your first destination अगर PhD करना है, and you can go various of other institutions are also providing for PhD. Secondly, सिवाय judge के, there are many opportunities like being a teacher, being a professor. It is also one of the most dignified, position. And also you can go for, more research field, and, going for jobs in MNCs. MNCs are paying very nice to their recruiters, to their employees. So yeah, there are many options other than their like list is very lumpy and the short time is short. So yeah, these are the other options. Thank you so much. Yeah, that's perfectly fine. You can. Anyone else? Ma'am, आपको कोई doubt है तो पूछ लो. Thank you so much, Manisha. I think you can conclude. Yeah.
Thank you so much, sir and ma'am, for your words and for your valuable, life-changing, maybe. It's not life changing, these are life principles. आप सबको develop करने चाहिए life के साथ, Yeah, time sure. के साथ. Thank you so much, ma'am and sir, and all of who are present here. And I would just like to say that all of you may have a nice journey and have great success in your lives, and have a very nice day, and stay safe and stay healthy. Corona se bach ke rahein. All right. Thank you so much, both of you, Dhruv and Shweta. And it was a very, very insightful and very, very interesting and very interactive session. I'm glad that both of you accepted my invitation and being here today. And I think I made a very good decision in calling you both. Very, very good session. Thank you so much. And thank you for sharing your contact numbers with your juniors also. I'm sure they are going to bug you very much. And because सबके questions answer नहीं हुए हैं, मुझे तो पक्का यकीन है. So thank you so much for being here, and lovely students. Thank you for interacting with us, and I am very happy seeing you both again and talking like professionals. Really proud. Thank you so much. Thank you, ma'am. It was a pleasure. Same. My answer is same, not different. Okay, again copying answers. Yes, sir. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you all the students. Thank you for making the session very interesting and interactive. Thank you so much. Yes. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, I would like to add one point. मतलब अगर Yes, थोड़ा सा please. time हो तो फिर मैं see what my father asked from me is, जब मैं starting में गया था कि मुझे पैसा चाहिए, जैसे श्वेता ने बताया, it's a good point. We have the mentality कि मेरे दोस्त कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा. We feel complexion in that situation. It's perfectly fine. श्वेता जिसने बताया वैसा बहुत अच्छा ऑप्शन है ये. But एक ने अपने माइंड में डेवलप कर लेना कि तुम्हें पैसा चाहिए या पावर चाहिए, क्योंकि पावर थोड़ा टाइम लेती है, पैसा तुम कभी भी कमा सकते हो. ठीक है. तो ये मत देखो कि तुम्हें करना क्या है. LLM जुडिशरी इज नॉट एन ऑप्शन. गो दैट यू हैव द मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट. कोई तुमसे पूछे सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन कहाँ से है, इसका रीजन क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट क्या है, बाहर का सेक्शन क्यों है ऐसा, ये क्यों है, क्योंकि लोग पूछेंगे तुमसे. तुम एक बार वकील बन गए, तुम पब्लिक में जाओगे, तुमसे पूछेंगे यार, वो कहते हैं गांव में ताऊ जो होते हैं, अमेरिका में ऐसा क्यों है, ऐसी वर्ड्स होते हैं उनके शायद. ठीक है, अमेरिका में ऐसा क्यों है, मलेशिया में ऐसा क्यों है, इंडिया में क्यों, इंडिया में क्यों. सो यू हैव द रीजंस, रीजनेबल रीजंस. ऐसे नहीं हवा में बातें कर दी उनके साथ कि उनको क्या पता चलेगा. तो ये अपने माइंडसेट में रखना, तुम्हें पावर चाहिए, पैसा चाहिए, एंड गो फॉर द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. ये नहीं कि टीचर ही सब कुछ कराएंगे, खुद भी सामने से पढ़ो. सामने से क्लास में बैठ के पीछे सोओगे तो मेरे जैसे ही बनोगे. जज नहीं, बैक बेंचर. मैंने भी पढ़ाई करी थी, पढ़ लेना तुम सारे. यही कहना था बस. This is all I want to give you. All right. All Thank the you so best much. for your main, sir. Yes, all the best. All the best for your future, both of you. And yes, we all hope to have more interactions with you. You become really successful, and so that we can go back to you again and again for these inspiring sessions. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. All right. Thank you all. We are ending here. Thank you so much.